So for the first time in Genshin history, MiHoYo ने सारे के सारे 6 बैनर्स एक साथ रिलीज किए हैं पैच आने के पहले. And if you are an F2P or just an average normal guy playing Genshin, you will be quite confused because this time we have Shenhe, we have Xiao, we have Zhongli and we have Ganyu. And you might be thinking, यार मैं विश किस पे करूं? मैं मुझे सारे चाहिए बट मैं सारे ले तो नहीं सकता, मुझे कोई एक चूज करना पड़ेगा. So before choosing, ask yourself one question. Do you have a DPS? And if the answer to that is yes, I have a DPS and it's a hard carry DPS, like अगर तुम्हारे पास पहले से गान्यू है या शाओ है या हुटाओ है या फिर यूला कोई है, then you can skip on the DPS characters. But if you're a new guy and तुमने अभी कुछ महीनों पहले गेंशिन खेलना स्टार्ट किया है, तुमको हार्ड कैरी DPS चाहिए, then select either Ganyu or Xiao. Now the next factor to consider कि अगर तुम DPS select कर रहे हो, Do you like Ganyu's gameplay? क्योंकि जहां तक मेरी बात आती है एंड बहुत सारे जो दूसरे गेंशिन प्लेयर्स है, गान्यू काफी हार्ड हिटिंग कैरेक्टर है बट उसका गेम प्ले थोड़ा सा बोरिंग है. जस्ट होल्ड योर चार्ज शॉट एंड बूम, देयर यू गो, दैट्स इट. एंड इफ यू वांट लाइक a fun mechanic, like plunge wala mechanic, hit your ult and keep on plunging and ease, then you might use Xiao. So ask yourself कि तुम fun loving character, तुमको ऐसा फन मैकेनिक वाला कैरेक्टर चाहिए या फिर हार्ड हिटिंग कैरेक्टर चाहिए. इफ द आंसर इज हार्ड हिटिंग कैरेक्टर, गो फॉर गान्यू. अगर एक फन मैकेनिक वाला कैरेक्टर चाहिए, देन गो फॉर शाओ. So yes, that was the first segment. Now next segment, अगर तुम्हारे पास DPS है, if you have like 4 to 5 DPS already built, then you should go for either Zhongli or Shenhe. अगर Zhongli नहीं है तुम्हारे पास, then I 100% suggest if you have 3 or 4 DPS and you don't have Zhongli, go for Mr. Zhongli. अगर तुम्हारे पास शाओ भी है, DPS भी है, जोंगली भी है, अच्छे खासे सपोर्ट्स भी है, then the final option will be Shenhe. And अगर तुम वाइफू कलेक्टर हो, you don't care about damage and support and DPS, then obviously if you are a waifu collector, you will either go for Shenhe or you will go for Ganyu. Okay, so that's it. अगर इसको sum up करूंगा, if you don't have DPS, तुमको DPS की बहुत ज्यादा जरूरत है, then don't cave in and pull on the Shenhe banners. No, you need DPS. So go for Xiao or Ganyu. If you have a good DPS and you're struggling in the abyss, like Zhongli, he gives you a shield. He shreds 20% resistance and उसका जो ult है, it like petrifies the enemy for 4 seconds. So he's a really good support. And last Shenhe, we don't know much about Shenhe. So if you're a waifu gamer, you can go for Shenhe. Now moving on to the next segment, the 4 stars. Shenhe और शाओ जो है ये होंगे फर्स्ट हाफ में. इनके 4 स्टार कैरेक्टर्स जो है सेम है. 4 स्टार्स है चोंगयुन, निंगवांग एंड युनजिन. चोंगयुन इज आउट ऑफ मेटा. आई डोंट थिंक ही वाज एवर इन द मेटा, तो मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट केयर अबाउट चोंगयुन. Ningguang and Yunjin, you can get like geo resonance with these guys, but I'm not sure how good Yunjin will be. So Yunjin is quite an iffy character. So if you ask me, the 4 stars on the first banner, they are not that great. But if we move on to the 4 stars on the second half of 2.4, we have Yanfei, we have Beidou, and we have Xingqiu. Xingqiu, the best hydro support in the game ever. If you have a pyro character, you should definitely get a Xingqiu, and his constellations are OP as fuck, bro. You should get Xingqiu. So if you ask me, मैं अगर तुम एक नए प्लेयर हो एंड तुमको समझ नहीं आ रहा है क्या पुल करना है, मैं बोलूंगा शाओ और शेन्हे जो है स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं. इन पे जो 4 स्टार्स है ये उतने अच्छे नहीं है. गो फॉर गान्यू बैनर, दैट इज वर्थ योर मनी. तुमको जो 4 स्टार्स मिलेंगे एकदम धांसू 4 स्टार्स है. एंड गान्यू, लाइक डू वी इवन नीड टू टॉक अबाउट गान्यू? शी इज द बेस्ट DPS आउट देयर. जस्ट चार्ज एंड हिट. बट प्रॉब्लम ये है कि उसका गेम प्ले मैकेनिक थोड़ा सा बोरिंग है. सो इट डिपेंड्स कि तुम फन फैक्टर चाहिए या फिर तुमको सिर्फ डैमेज चाहिए. बट एज अ सजेशन फॉर द न्यू गाइज आउट देयर, आउट ऑफ द 4 बैनर्स, गो फॉर गान्यू बैनर. पहले के 2 तुम स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है. शेन्हे है, उसका रीरन आ जाएगा बाद में, मत टेंशन लो. गान्यू का रीरन अभी ऑलमोस्ट 1 साल के बाद आ रहा है. सो यू कैन, yeah, it was January last year, so exactly 1 साल के बाद इसका रीरन आया है. So we are not sure Ganyu next time कब आएगी. So don't miss out on Ganyu. Go for her. If you get Ganyu early and you have some primo gems left, Zhongli, you can go for Zhongli. So I think जो 4 कैरेक्टर बैनर्स है
उसमें तुमने फर्स्ट वाले बैनर्स को यू कैन इग्नोर, लाइक दीज आर ग्रेट कैरेक्टर्स, डोंट ऐसा मत सोचो कि मैं इग्नोर करने बोल रहा हूँ मतलब खराब कैरेक्टर नहीं. Xiao is a top tier DPS. But the problem is the 4 stars. I'm not quite happy with the 4 stars. Like collecting the constellations for these guys, I'm not quite sure how good they will be, and I have no fucking idea about Yunjin. She's a Geo character, and I don't know why the fuck she's holding the Dragon's Bane, which is an EM scaling weapon. Maybe मैं इसका कुछ part miss कर गया जहाँ पे उन्होंने explain किया होगा कि इसको EM क्यों लगता है. I'm not sure. So don't quote me on that. But I think the 4 stars on this banner are not that great. But the 4 star on Zhongli and Ganyu banner are great as fuck. So you should save your Primogen for the second half and dump all of it into the Ganyu banner or Zhongli banner. Now talking about the weapon banners. First half में Primordial Jade Wing Spear and Calamity Queller. Calamity Queller obviously Shenhe के लिए and ये Xiao के लिए. And 4 stars जो है इस पे Widsith और Lithic, ये दोनों के अलावा बाकी सब मुझे इतने काम के लग नहीं रहे. Favonius Warbo, आई एम श्योर हमारे पास बहुत सारे कॉपीज आ चुकी है अभी तक. वी डोंट नीड एनी मोर कॉपीज ऑफ Favonius Warbo. सो ना, ये बैनर पे सिर्फ Calamity Queller एंड ये 5 स्टार जो है ये अच्छे, बट आई वुड नेवर सजेस्ट दैट यू शुड पुल ऑन अ वेपन बैनर बिकॉज वेपन बैनर्स आर ट्रैप एज वी ऑल नो. इफ यू वांट जेड स्पीयर मे बी तुमको ये मिल जाएगा, या तुमको Calamity Queller चाहिए तो ये मिल जाएगा, बोल नहीं सकते क्या मिलेगा. सो skip on this one. And the last weapon banner is Ammo's Bow and Vortex Vanquisher. Vortex Vanquisher is back after a long time. And for my Zhongli, I might go for the Vortex Vanquisher. I'm not quite sure. Maybe. And अगर तुम Ganyu पे pull कर रहे हो, you should get one of these. Ammo's. Ammo's जो है standard से भी मिल सकता है. So it's up to you. And Ganyu के पास जो है फ्री टू प्ले ऑप्शंस काफी अच्छे. द प्रोटोटाइप क्रेसेंट बो, इट्स रियली ग्रेट, द बेस्ट F2P ऑप्शन फॉर हर. अदर देन दैट हामायुमी, वो भी मेरे हिसाब से इनाजुमा का जो क्राफ्टेबल बो है, दैट्स आल्सो क्वाइट ग्रेट. सो इफ यू स्किप ऑन द वेपन बैनर्स, दैट्स आल्सो नॉट अ बिग डील. तुम स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. जस्ट फोकस एवरीथिंग ऑन Ganyu और Zhongli बैनर्स फॉर द न्यू प्लेयर्स, स्पेशली Ganyu और Zhongli बैनर, बिकॉज Zhongli मेक्स द गेम इजी. गेम एकदम इजी मोड हो जाता है. एंड यस, Ganyu द बेस्ट DPS आउट देयर. जस्ट स्टैंड, दूर रुको, वहां से 4 शॉट सेट करो. सो आई थिंक यही मैं बोलना चाहूंगा कि Ganyu बैनर पे पुल करो. 4 स्टार्स Ganyu बैनर के काफी अच्छे हैं. द कॉन्स्टलेशंस ऑन दीज गाइस, आई एम नॉट श्योर अबाउट Beidou constellations, but Xingqiu के constellations are really good. So yes, go for Ganyu banner. इतना ही मैं बोलना चाहूंगा. So that's it from my side. See you guys in the next video. Bye bye.